Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Am I audible? Ritesh, am I audible? Yes, sir. Okay. In previous class, we talked about the load equalization, and today we have to calculate or say derive. We have to derive the equation of moment of inertia of a flywheel required for the load equalization. Can anyone tell me what is load equalization? It is what is load equalization? It is what is load equalization? Preeti, Anjali, Sir, the smoothing of fluctuating load is called load equalization. by which arrangement we reduce the fluctuation in Yes, source sir. is called load equalization. Suppose this is a load characteristics of a hammer or say pressing mill with respect to time. The load requirement is
that. This is t, this is time. In x-axis we plot time, and in y-axis we plot the torque. Suppose this is the load torque, and this point is TLH, and this point is TLL, and we have to use a motor whose torque is actually varying from minimum point to maximum, and when the low load requirement, or say low load region is coming, at that time the torque required is less, so the machine torque also less. And when the torque requirement is high, then it will minimum to maximum, and in between low load torque it goes between maximum to minimum. This is T max, and this is T min, and this is basically machine torque. And at that time the speed of the system is such that when the high when the load demand is more, then the speed is, or say speed will drop, and when the load requirement is less, at that time the speed will increase of that system. It's like that. This is basically omega m. We have system like pressing mill, or say electric hammer. The torque characteristics with respect to time is the second, like second the diagram, like the second diagram, and the characteristics of motor should be like the first diagram to fulfill the torque requirement. And suppose the time taken for high torque is TH, and the low load region is TL. We are considering that. So we have to calculate what is the moment of inertia of the flywheel at that time. So from the first figure, we have to draw the equation, or say we have to make a equation. What is the nature of that curve? Can anyone tell me? What is the nature of that curve? We have to we have to make the equation of that curve. What is the nature of that curve? Can anyone tell me? What is the nature? The nature of the curve is y is equal to c minus mx. The nature of the curve is like y is equal to c minus mx. So if we want to draw the curve, what is the nature? He says in y-axis, which quantity we have denoted?
We have denoted in y is omega m. Angular speed. And so what is the value of c here? What is the value of c here? It is Constant. what is the value in which point the curve cut on y-axis? The value of the speed at that point is omega m0. So the value of c should be omega m0, then minus what is the value of slope here? If the motor speed torque characteristic is drooping nature, then we can fulfill the our requirement torque for load equalization. So from the drooping curve, we have to make the equation of that curve. The curve is like y is equal to c minus mx. Here the value of y is omega m because we have plot the speed in y axis. So the value of y is here omega m and the value of c is omega m0. And what is the slope here? What is the initial value? Omega m0. Then we intersect a point where the value is omega r and tr. So here the slope should be omega m0 minus omega r. It should be omega mr. Mr, right? Mr by tr into t. This should be the equation of the curve, or say this is the equation of speed torque characteristics. It is, Yes, sir. ये समझ में आया? ये समझ में आया? देखो, ये जो हमारा कर्व है इसका इक्वेशन ये है, ये है हमारा इक्वेशन. आया समझ में? Sir, all omega m0 minus omega mr upon tr into t वाला थोड़ा एक्सप्लेन रिपीट कीजिए तो. अच्छा. The nature of the equation is equal to y is equal to m c minus mx. The nature of the equation, or say nature of the line, is like y is equal to c minus mx. So the here the value of c is omega m0. What is the m? What is the name of the m? What is the name of m? This is basically slope. Suppose the nature of a curve is like that. It should be equation is equal to y is equal to mx. M is the slope. If this is theta, then m is tan theta. And if we take a point like that, then what should be the value of tan theta here? Suppose this is, suppose this point is A, suppose this is M, this is N, and this point is O. Now tell me the value of tan theta here. It is. Yes, sir. Tell me the value of tan theta from that.
On upon base O n upon upon, the mn. yeah, yes, So in that curve, the value should be omega m0 minus omega mr by tr. This is the value of slope, yes sir, yes sir. and this is basically negative drag nature. That's why we have made a minus on the previous of that m. अब समझ में आया? Okay, okay sir. Okay. Now moving on to next part. Tell me the fundamental torque equation. TL minus T equals to J uh, d omega m upon dt. T minus TL is equal to J d omega m dt. Good. And what we got in previous equation? Omega m is equal to omega m0 minus omega m0 omega mr by tr into t. Derivative this equation. Derivative that equation. After derivative, what we get? Derivative the equation number 1. Tell me what we get. D omega by dt. This should be 0 because omega m0 is a constant value. It is. Yes sir. So this should be value. Omega If we derivative of this term, then this should be 0 because this is a constant term. Then, and this is also a constant term because this is the slope. So write it fast. Omega mr by tr dt. After derivative, we get this. Suppose this is tau m, and so what is the value of tau m? What is the value of tau m? omega m0 minus omega mr upon tr. Right. This Tm is called mechanical time constant. This is mechanical time constant. Suppose this is equation 2, d omega m dt. There should be term j. The mechanical time constant value should be
j into omega m0 minus omega mr by tr. And how we get it? Put this value, suppose, oh, I have make a mistake here. Achha, okay, okay. Put a j here. Okay, I have to derive it again because I have made mistake here. Suppose we have to omit this line. First, after derivating, we get this equation. It is after the derivating of equation number 1, what we get, or say after differentiating equation 1, what we get? First, tell me. It is. It is. Yes, sir. D omega m upon dt equals to minus omega m not minus omega mr upon tr dt upon dt. This is after derivating the equation 1, we get. Now, write the value of d j into dt. What should be the value? There should be a j. If we multiply by j in both sides, we get this equation, Yes, sir. and this is basically the mechanical time constant. This should be minus tau m dt by dt. This is basically mechanical time constant. So if we put the value, the equation from the equation 2, if we put the value of j d dt of omega m in that fundamental torque equation, what we get? What we get? Minus tau m dt by dt. We get this. हम अगर इस वैल्यू को फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन में बैठा देंगे तो देखो ये वैल्यू आ जाएगा, because the right side of the fundamental torque equation is j ddt of omega m. It is. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. we put that value from the equation 2. Then we get this. After rearranging this equation, what we get? Tau m dt of ddt of dt plus t is equal to tl. देखो ये समझ में आया कि नहीं? After rearranging the fundamental torque equation, we get tau m ddt of t plus t is equal to tl. Yes, sir. Okay. And after that, we rearrange this equation like dt by ddt plus 1 by tau m t is equal to tl, and the equation is like y dashed plus ay is equal to, say, b. This is like that. So if we compare this equation, we can write it's like that, or
You can write it also. This is basically derivative. Y dash means dt of y. So what is the solution of that equation? Suppose we have a equation like dt of y plus ay is equal to b. What is the solution? The solution is like y is equal to y infinity minus y 0 to y infinity into e to the power minus 80. This is the solution. This should be plus. Should be plus. So if we have a equation like dt of y plus ay is equal to b, the solution of this equation is like y is equal to y infinity. That means if the value of t tends to infinity, at that time the value of y is y infinity plus y0. Y0 is the initial value. When the value of t is equal to 0, at that time what is the value of y? This is the y0 minus y infinity into e to the power minus 80. So from that graph, tell me the value of uh, what is the highest value of torque from the load, actually from the torque characteristics of machine, or say load and machine. What is the highest torque, and what is the, if we tends t tends to infinity, what should be the value of machine torque? It is T max. t max. No, t max is the value of machine torque at t is equal to th. Okay. हम अगर ऐसे ही चला जाते तो कितना वैल्यू हाईएस्ट होता? हाईएस्ट वैल्यू कितना होता? और मान लीजिए ये हम अगर जो एक्चुअली किया क्या है लोड इक्वलाइजेशन में, व्हाट वी हैव डन इन लोड इक्वलाइजेशन, वी आर टेकिंग कंपैरेटिवली लोअर कैपेसिटी मशीन. अगर मान लीजिए ये लोड इक्वलाइजेशन हम नहीं करते तो कितना टॉर्क रिक्वायर होता, मशीन टॉर्क कितना रिक्वायर होता इस लोड को चलाने के लिए? मैक्सिमम होता सर। नहीं, मैक्सिमम नहीं. ठीक से देखो, अगर मान लीजिए एक लोड टॉर्क है जो ये कर्व फॉलो कर रहा है, ये कर्व ऐसा कर्व फॉलो कर रहा है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक हैमर और से प्रेसिंग मशीन लाइक हमार दैट. हमार सर इलेक्ट्रिक हमार। हाँ. सो अगर मान लीजिए हम फ्री व्हील फ्लाई व्हील वहां पर नहीं लगाते, यानी इन बिटवीन मोटर एंड लोड, इफ वी डज नॉट कनेक्ट ए फ्लाई व्हील, what should be the maximum value of torque to rotate or say to operate that machine? कितना होता? अच्छा, इस रीजियन में बोलिए किसका टॉर्क ज्यादा है इस रीजियन में? सर फ्लाई व्हील से तो हम लोग फ्लक्चुएशन है उसको ओवर मतलब कम करते हैं। हाँ, उसको तो कम कर रहे हैं ना.
आप बोलिए पहले, ये जो टी एच है ना, इस रीजन में किसका टॉर्क ज्यादा है, लोड का या मशीन का? ये तो सर लोड का ज्यादा है। लोड का ज्यादा है। अगर मान लीजिए हमें ये मशीन को घुमाना था, ठीक है, चलाना था, तो कितना टॉर्क रिक्वायर होता मिनिमम चलाने के लिए? मशीन टॉर्क कितना होना चाहिए था? लोड टॉर्क के इक्वल। लोड टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क होना चाहिए था। यस सर। सो हम अगर इस मशीन को, मान लीजिए जो इन्फिनिटी तक बोल रहे हैं, अगर इसे चलाएंगे तो कितना लोड टॉर्क आएगा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, वो इन्फिनिटी जो बोल रहे हैं ना, वो टी एल एच होना चाहिए। आया आया समझ में? आप बोलिए। लोड टॉर्क को हाई करना है। हाँ, हाई, वो जो जितना हाई है वो उतना तक जाना चाहिए। अगर इन्फिनिटी को हम छोड़ेंगे, अगर मशीन को घुमाना है तो हम उतना टॉर्क हमें चाहिए था। यस सर। लेकिन इनिशियली हम कितना दे रहे हैं मशीन में? फिर देखिए, लेकिन मशीन में हम दे रहे हैं कितना? ये मशीन टॉर्क का कार्ड देखिए, कितना दे रहे हैं? मशीन के टॉर्क का कितना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मशीन टॉर्क? Which one is the machine torque curve? This one, टी सर। T. So what is the initial point of T? So starting point कौन सा है? When T is equal to zero, when small t is equal to zero, what is the value of machine torque? समझ में नहीं आ रहा है? It is, ये यस कार्व, सर। कार्व शुरू कहाँ से हुआ है बोले? What is the starting point कर्व of से machine torque? सर, लोड टॉर्क से शुरू हुआ है कर्व सर। मैक्सिमम पे लोड टॉर्क से शुरू हुआ है। मैक्सिमम पे नहीं, देखिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ, कहाँ से शुरू हुआ है मशीन टॉर्क, कहाँ से शुरू हुआ है? ये पॉइंट से। यस सर। तो उसमें वैल्यू कितना है? मशीन टॉर्क का वैल्यू कितना है? मिनिमम है। टी मीन है। हम्म। अगर इन्फिनिटी तक हम उसे छोड़ते तो कितना जाता? ये जाके कहाँ मेट होता है? यहाँ पर आता, टी एस टी आर एच। टी एल एच पर जाता। लेकिन हम उसे पहले ही वो लोड रिलीज कर दिया तो कर्व चेंज हो गया। तो मतलब ये वाई जीरो का वैल्यू यहाँ का, यहाँ पर कितना होना चाहिए? टी मीन होना चाहिए। इनिशियली मीन होना चाहिए। यस सर। हाँ। सो तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? टी इज इक्वल टू टी एल एच प्लस टी मीन माइनस टी एल एच ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एम होना चाहिए। देखिए, यस। देखिए आया समझ, समझ में आया कि नहीं?
यस सर, वो कंपेयर करके निकाले हो ग्राफ हाँ, से ना। कंपेयर करके निकलना है. यस सर। After comparing the solution of y, we get the solution of t is equal to TLH plus t min minus TLH into e to the power minus t by tau m. अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा, TLH 1 माइनस e to the power minus t by tau m प्लस t min e to the power माइनस t by tau m. ऐसा होगा, देखिए. हम अगर इसे रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा. यस सर। नाउ व्हाट इज द टाइम रेंज ऑफ दैट रीजन. इसमें टाइम रेंज क्या है, ये कब कब तक चलेगा. स्टार्टिंग से चल रहा है, चल रहा है ना स्टार्टिंग से. यस सर। ये कितना देर तक चलेगा, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टाइम, अब तक, अप टू टी th, एच। up to th. So यस सर। at t is equal to th, what is the value of t, बोलिए. At small t is equal to th, what is the value of capital T. th शुरू हुआ है यहाँ से, जब th खत्म हुआ कहाँ हुआ, यहाँ खत्म हुआ. यस सर। What is the value of at that point of t, this मैक्स। t max. That means the value of t is equal to t max. The value of t is equal to t max. If we put that value in the above equation, what we get, t max is equal to TLH 1 minus e to the power TH by tau m plus t min e to the power minus TH by tau m. देखिए ऐसा होता है, होगा. यस सर। So we have to calculate the value of tau m from this equation. We have to calculate the value of tau m from that equation. How to calculate? How to calculate this? We have to calculate the value of tau m from that equation. What should be the value? T max is equal to T LH
plus T min minus TLH into e to the power minus TH by tau m. Can we rearrange this equation like that? Ritesh, बोलो हम कर सकते हैं ऐसा कि रितेश Yes, sir. कर सकते हैं. Now T max minus TLH is equal to T min minus TLH into e to the power TH by tau m. ऐसे लिख सकते हैं. Yes, sir. Which value is greater in between T max and TLH? Which one is higher? Emax and TLH. T. Which one is higher value? Which one have higher value? It is. Yes, sir. Which one has a higher value? Which one has higher value? TLH or Tmax? Okay. Tmax. No. See that curve? Oh, TLH. Sorry. TLH is higher value. So I have rearranged this value because the value of TLH is greater than Tmax, and also from the Tmin. So TLH Tmax by TLH minus Tmin is equal to e to the power minus TH by tau m. होगा ऐसा. देखो हितेश, देखो Yes, sir. हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Now after taking log TLH Tmax by TLH Tmin is equal to minus TH by tau m. होगा ऐसा? होगा. So log m by n लिए इसमें राइट हैंड साइड में log. log e to the power minus 80. हाँ, वो क्या होता है? मान लीजिए अगर log e base e to the power a होगा तो क्या होता है इसका वैल्यू? a हो जाएगा. A. Yes, sir. हाँ हाँ ठीक है ओके सर.
लॉग m बाई n को भी तो हम लोग लॉग m माइनस n में कर सकते। हाँ हाँ। तो अगर ये माइनस को हमें हटाना है तो क्या करेंगे बोलिए? माइनस को हटाना है, because the left hand side is t h by tau m is equal to log e base t max by t l h प्लस t min है। ये है हमारे पास। माइनस को हटाना है, क्या लिखेंगे बोलिए? टी एच बाई टाउ एम इजिकल टू लॉग टी एल एच माइनस टी मीन बाई टी एल एच माइनस टी मैक्स। देखिए ये लिख सकते हैं, कैन आई राइट लाइक दैट? सर माइनस कहाँ गया माइनस? देखिए राइट साइड भी देखिए, क्या किया राइट साइड को। ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यस सर। ऐसा ही कर दिया। ओके ओके सर ओके। So now we can write the value of tau m is equal to th by log e tlh minus t min by tlh minus t max। ऐसा क्यों किया बोलिए? अब क्या अब टाउ हम m का वैल्यू फाइंड अब करें। क्या हम j का वैल्यू निकाल सकते हैं? टाउ m का वैल्यू क्या था? देखिए टाउ m का वैल्यू क्या था? ये है टाउ m का वैल्यू, यस सर। j into omega m0 minus omega m by tr. So from this we can calculate the value of j. So what should be the value of j? J is equal to tau m by omega m0 minus omega r into say tr। यस सर। हम ऐसे लिख सकते हैं is equal to tr by omega m0 minus omega r th by log of t tlh minus t min by tlh t max। अब j का वैल्यू आ गया। यस सर। एक्चुअली व्हाट इज j? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। एक्चुअली वो जो फ्लाई व्हील हमें लगाना है वो कितना रेडियस होगा, कितना उसका मास होगा, ये हमें सब तो पहले से जानना चाहिए, नहीं तो लोड इक्वलाइजेशन नहीं होगा। यस सर। इसीलिए हमें ये इक्वेशन डिराइव करना पड़ा। We actually derive this equation from the region t is equal to 0 to th।
ये जो जे निकाला हम कौन से रीजन से निकाला? इट इज 0 to TNH. 0 टू इसका टाइम रीजन कितना था? E is equal to ये रीजन में हमने कंसीडर कर ये रीजन कंसीडर करके हमने जे का वैल्यू निकाला। Yes, sir. और एक टाइम रीजन है, वो कौन सा है? और एक टाइम रीजन है वहां पर, बोलिए। और एक टाइम रीजन है, वो कौन सा रीजन है? टीएच के बाद वो शुरू होता है, खत्म होगा टीएल पे। Actually, the value is the value of the starting time is th and the ending time is th plus tl. There is also a time region where the load torque is in lower value. It is, Yes, sir. देखिए और एक दूसरा रीजियन है, वहां से भी हम निकल सकते हैं जे का वैल्यू, और निकलना भी है वहां पर। सो वो स्टार्टिंग जब हो रहा है वहां पर मेशिंग टॉर्क कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट मेशिंग का Machine टॉर्क to कितना है बोलिए? ये टीमीन है मिनिमम। नहीं नहीं नहीं, टीमिन नहीं है वो। अब रीजियन कौन सा है? अब हम दूसरे रीजियन में चला है, मतलब नाउ द स्टार्टिंग टाइम इज th, नाउ द स्टार्टिंग टाइम इज th। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस पॉइंट से, और एंड होगा यहाँ पर। यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम का वैल्यू कितना है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम एट दैट पॉइंट? th, what is the value of the time at that point? It is टीएच कहाँ पे है सर? th खत्म कहाँ हो रहा है? th खत्म कहाँ हो रहा है? th एक्चुअली वैल्यू कितना है? ये है th। यस सर। th खत्म कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे हम्म। द एंड पॉइंट ऑफ th इज दिस वन, और जो ये रीजियन है, ये फाइनल वैल्यू क्या है? th प्लस tl। टीएच प्लस टीएल। यस सर। तो मान लीजिए वो टाइम कहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर? एक्चुअली वो क्या स्टार्टिंग क्या कैसे हो रहा है ये देखिए, टी सर एक बार हम लोग 0 टू टीएच तक किए, अब 0 टू टीएल टीएच प्लस टीएल करेंगे।
ऐसा है वो टाइम रीजन। स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है, टी एच पे, एंडिंग हो रहा है टी एच प्लस टी एल पे। यस सर। हम अगर देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, टी डैश का वैल्यू कितना है, टी माइनस टी एच, लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए। यस सर। क्यों किया, क्योंकि वो जो पहले वाला जो इक्वेशन था वो उसको माइनस किया। रीजन था क्या, जीरो टी टी एच था। To get similarity of the previous one, so we have to rearrange this time scale like 0 to 0 less than equal to t dash less than equal to tl। तो आप बोलिए मेसिन टॉर्क स्टार्टिंग पॉइंट में इस रीजन में कौन सा रीजन है, अब अभी अभी जो रीजन है, नाउ वी आर टेकिंग द रीजन ऑफ टाइम 0 less than equal to t dash is equal less than equal to tl। In this time region, what is the starting value of machine, or say what is the starting value of machine torque or initial value of the machine torque in the region टी एच 0 less than equal to t dash less than is equal to t, टी एच सर। th, th, वो तो लोड टॉर्क का हो गया, मशीन टॉर्क का। मशीन का रेंज कितना है, मतलब मशीन टॉर्क का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। मशीन टॉर्क का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बोलिए। What is the minimum value of machine torque and what is the maximum value of machine torque? टी मीन एंड टी मैक्स। T min and T max. Good. So in the region 0 less than equal to T dash less than equal to TL, what is the initial value of machine torque? मैक्स। T max. Good. And what is the desired value of the, say, what is the desired value of uh, load torque and this in this region? What is the value of load torque in this region? What is the value of load torque on that region? लोड टॉर्क कितना है इस रीजन में? टी एच प्लस टी एल। कि इस रीजन में बोलिए तो कौन सा टॉर्क ज्यादा है, लोड टॉर्क की मशीन टॉर्क इस रीजन में कौन सा टॉर्क ज्यादा है बोलिए। मशीन टॉर्क। क्यों? क्योंकि मशीन टॉर्क मैक्सिमम पे है। नहीं, मशीन टॉर्क का वैल्यू देखिए कहाँ जा रहा है, ओ इस ऐसा, पॉइंट जा हाँ रहा तब है। तो लोड टॉर्क। हाँ, लोड टॉर्क कहाँ है, ये टीएलएल है ना। लोड टॉर्क का वैल्यू कहाँ है, ये है टीएलएल। और मशीन टॉर्क कहाँ है,
ये है मेशिंग टॉर्क। तो मतलब मेशिंग टॉर्क स्टार्टिंग हो रहा है टी मैक्स से। अगर इन्फिनिटी तक छोड़ देते, ये सिस्टम अगर इन्फिनिटी तक चलता, तो कौन सा टॉर्क में जाता? प्रीवियस से कंपेयर कीजिए। ये स्टार्टिंग हुआ था टी मीन से। अगर इसे हम इन्फिनिटी तक छोड़ देते तो कहाँ तक जाता? टी एल एच पर जाता। अभी टी मैक्स से शुरू हो रहा है। अगर इन्फिनिटी तक छोड़ देते तो जाता कहाँ? TLL तक। टी एल एल पे जाता। गुड। तो उस रीजियन में क्या सॉल्यूशन होगा? अब टाइम रीजियन कौन सा है? हमारा टाइम रीजियन अभी अभी हमारा टाइम रीजियन कौन सा है बोलिए? TS से TS प्लस TL तक। Okay. Now similarly, if we solve the torque equation, what we get? ये क्या था? फाइनल वैल्यू था, मतलब इन्फिनिटी तक। मतलब टी एल एल होगा प्लस इनिशियल वैल्यू कितना है? मेसन टॉर्क का इनिशियल वैल्यू कितना है? T max। टी मैक्स। ये होगा टी मैक्स माइनस क्या था? बोलिए, माइनस क्या था? माइनस क्या था बोलिए? TLL। वाई मैक्स, वाई इन्फिनिटी था। एक्चुअली इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू वाई इंफिनिटी प्लस y0, y0 माइनस वाई इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस 80। ये था सॉल्यूशन। यस। अब यस सर। कंपेयर करके बोलिए इस रीजियन में। y यहाँ पर t होगा। अगर इंफिनिटी तक जाएंगे तो वैल्यू टी एल एल तक जाएगा। इनिशियल वैल्यू था टी मैक्स, फिर इंफिनिटी टी एल एल है। और यहाँ पर जो टाइम हम कंसीडर किया है टी डैश कंसीडर किया, इसीलिए यहाँ पर से टी डैश लिखा है। और वो पहले वाला जो माइनस ए था वो तो माइनस वन बाई टाउ एन था। हो गया? यस सर। कंपेयर करके ये आ गया। अब जब वो टी डैश का वैल्यू टी, ये एक्चुअली ये एल है कि ये एच की तरह लग रहा है, लेकिन ये एल है actually। अच्छा, अभी बोलिए टी डैश का वैल्यू टी एल में, अगर एट द टाइम टी डैश इज इक्वल टू टी एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? ये बोलिए, वो ग्राफ दिखाते हैं फिर। बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एट द टाइम
टी डैश इज इक्वल टू टी एल। कौन सा पॉइंट है टी डैश इज इक्वल टू टी एल? पॉइंट है ये है वो पॉइंट। टी डैश इज इक्वल टू टी एल पॉइंट है ये। तो वहां पर टी का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एट दैट टाइम? टी डैश इज इक्वल टू टी एल। इट इज वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ है? व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द मशीन टॉर्क? टी मैक्स। टी मैक्स। खत्म कब कब होगा? तब वैल्यू कितना रहेगा? टी टी मीन। ये मीन। मतलब टी डैश में कितना वैल्यू होगा टी का? टी मीन होगा। ये होगा ना? यस सर। टी मीन। Now put this condition on that equation. What we get? T mean is equal to TLL plus T max minus TLL into e to the power TL by tau m. देखो it is। यस सर, मिनिमम पे लेना। हाँ, ओके सर। we can write like that। यस सर। Then we have to calculate the value of tau m from that equation like previous one। So T mean minus TLL is equal to T max minus TLL into e to the power minus TL by tau m। Which one have greater value, T mean or TLL? टी Which मीन। which have higher value? टी मीन। T mean। So that means this should be right in first T max minus TLL is equal to e to the power minus TL by tau n। So after taking लॉग। log in both sides, T min minus TLL by T max minus TLL equal to minus TL by tau m। So what should be the value of tau m? TL by log T max L by T min minus TL। We can write like that। यस सर। So what is the value of moment of inertia from this equation? What do we get? Tell me। Tell me what is the value of tau m?
What is the value of tau m? J omega m0 minus omega mr upon tr. And what we get the value of tau m from this? We get the value of tau m is equal to TL by log T max minus TLL by T min minus TLL. Yes, sir. So we can easily calculate the value of J from this. What should be the value by TR by T in 0 in R into TL by log of ये वैल्यू होगा यहाँ पर स्पेस नहीं है Yes, sir. यही होगा from both region we can calculate the value of moment of inertia. So suppose the flywheel is like a circular disc. So what should be the value of moment of inertia for a circular disc? क्या होता है सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इट इज Yes, sir. सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पढ़ाई नहीं हो रहा है Sir, mv square by r. एम स्क्वायर बाई आर Yes, sir. स्क्वायर बाई आर नहीं वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह ऐसा कुछ हो रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर और भी भी आ गया रोटेशनल एक्चुअली सर्कुलर डिस्क है मतलब रोटेशनल स्पीड होगा Oh, और वो तो एनर्जी का इक्वेशन हो गया यू आर you are saying the equation of energy and I am asking you the equation of moment of inertia उसमें मास होता है और रेडियस होता है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में हमने पढ़ा है जब फ्लाईव्हील पढ़ रहे थे mr square. मास का the moment of inertia of a flywheel of a circular if the uh, flywheel in circular disc the flywheel have circular disc then the moment of inertia of that flywheel should be mr square Yes, sir. Mr square. and from this equation we get the value of moment of inertia so we have to design how much radius should be of that flywheel or how much mass should be there we have to calculate from that equation हमें अगर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना है वो पता चल गया तो उसके बाद हम डिजाइन करेंगे कितना रेडियस रखेंगे कितना मास देंगे ऐसा हुआ ना Yes, sir. अभी तो हम लोग दो रीजन का निकाले ना मोमेंट ऑफ हाँ इनर्शिया. दो रीजियन से हम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes, sir. कितना है हमें पता चल गया है अब हमें डिजाइन करना है कितना रेडियस रखेंगे कितना मास रखेंगे
I hope you are all understand this topic and how to calculate the moment of inertia of a flywheel. And that's all for today. पिछले नेक्स्ट दिन हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। एक प्रॉब्लम कैसे होता है, प्रॉब्लम करना है क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब क्वेश्चन Yes, में sir. ये प्रॉब्लम भी आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। So now I'm taking the attendance. Ritesh, Yes, sir. Anjali, Yes, sir. Deepak, Yes, sir. Preeti, Yes, sir. Piyush, Piyush, Pankaj, Yes, sir. Avinash, Yes, sir. Sambar, Akshay, Yes, sir. Sambar. Okay, I hope you have all understand this. If if you have any question regarding this, then ask me. And if you don't have any question, you may leave.